2 साल? 2 साल से तो बिल्कुल कोई बात पहले तो वही ना आई। 2 साल पहले क्या हुआ था? 2 साल से बुखार आएगा। बुखार आया था? हाँ। कितने दिन तक बुखार आया था? ऐसे ही नहीं खा, ज्यादा ना है, ज्यादा ना है? दवाई खा लेते ऐसे ही भी जाता है। अच्छा, खांसी भी थी क्या? ना 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 बिल्कुल ना। अच्छा, बुखार आया, उसके कितने दिन तक बुखार रहा? कभी कबू आओ तो। अच्छा, सुबह ज्यादा बुखार होता था या शाम में ज्यादा बुखार होता था? शामों जैसे दिन शामों में होता था हल्का। हाँ हाँ, वैसे कोई ज्यादा बुखार नहीं आया। अच्छा, तो फिर उसके बाद फिर आपने क्या किया? पेट कब से फूला है आपका? पेट को तो 2 साल में। 2 साल से? जब बुखार आया था उसके बाद से पेट? तो फिर आपने इतना ही फूला था, इससे ज्यादा भी फूला था? नहीं, इतना ही फूला था। अब की ज्यादा है, पहले इतना ना है। इतना नहीं था? इतना ना। तो उसके लिए फिर आपने क्या इलाज लिया? इलाज मैंने करवाया तो बोले पानी छुटो जाएगा, तो मैंने पानी भी मैंने कर दी। अच्छा, हम छुटो आपको पानी ना छुटो आपको। अच्छा, मैंने ऐसी अगर सुखाए दे हाँ तो सही रहा। अच्छा, पेशाब ठीक होता है? ना पेशाब नहीं आती है। पेशाब नहीं आता? बहुत बात नामांतर का हवा बहुत नामांतर। अच्छा, पेशाब दिन में कितनी बार जाती है? जाती है, कई बार जाती है, मगर बूंदन से पेशाब बूंद आता है? ताकत से। हाँ। अच्छा, ठीक है। और टीबी का इलाज किसी ने कराया आपके घर में? ना, मेरे घर में काबू टीवी है ही। काबू टीवी नहीं है? अच्छा, आपको खांसी बलगम ना बिल्कुल है ना? खून की कभी उल्टी आई हो? ना कबू ना। अच्छा, महीना ठीक होता है? महीना तो बिल्कुल बहुत दिनों से चला हुआ नहीं हुआ? ना। कितने साल से? महीना को गई हूँ कम से कम 10-12 साल। 10-12 साल। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 2 लड़का है। 2 लड़का, लड़की? 2 लड़का 2 लड़की। 2 लड़का 2 लड़की। लड़का ही खत्म हो गए, हमारे जवान बहुत तगड़े हैं। अच्छा अच्छा, तब से ये दिक्कत है, तब से ये दिक्कत हुई। हम बहुत तगड़े, कोई तकलीफ ना होती हमारे। ठीक है, अब जब परेशानी है। अच्छा, तो आपको जो है ये पेट जब फूलने लगा तो इतना ही फूला या थोड़ा थोड़ा था, धीरे धीरे फूला है? जो एकदम फूल हुआ, एकदम फूल गया? एकदम 1-1.5 महीना से तो बिल्कुल ज्यादा ही, अब पर बहुत ज्यादा दिक्कत है। अच्छा, अब यहाँ को भागी। अच्छा, ठीक है। और कोई किसी तरह की कमजोरी बदन में? भूख नहीं लगती? भूख नहीं लगती? अपने आप खा लेता है। अच्छा, वजन कम हुआ कुछ आपका? वजन तो मैं तुलवाई नहीं, मतलब अंदाज से कपड़े ढीले हो गए हो इस तरह का? हो गए कपड़े ढीले? पहले तगड़ी थी इससे? बहुत तगड़े है। अच्छा, बहुत तगड़े थी? बहुत तगड़े। अच्छा, तो ये 2 साल से कमजोर हो गए? लल्ला मरो कब से हमारे। लल्ला कब मरा था? कितने दिन पहले? लल्ला को जाम जो सामान आ रहे हैं, मैं अंग्रेजी में तो जानता हूँ। सावन में 2 सावन में अगले सावन में खत्म हो गई। अच्छा, जवान लड़का। तो तकरीबन 2 साल हो गए? 2 साल है। तभी से ये परेशानी इतनी परेशानी है। अच्छा, ठीक। पहले कोई झाड़ू बुखार नहीं आओ तो। अच्छा, ठीक है। सब इनको काम करता है, भैंसा पालते है और सब कुछ करता है। कोई आपको डायबिटीज वगैरह की बीमारी है? शक्कर की बीमारी है? अभी जांच हुई शक्कर की? जैसे बाकी थायराइड ने शक्कर कैसी होती है? डायबिटीज मैं नहीं जानती। अच्छा, थायराइड का कुछ? ना थायराइड का भी नहीं। और ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ा था कभी? ना, यहाँ नापा गया ब्लड प्रेशर आपका कभी? वो तो ठीक है, कभी गड़बड़ नहीं हुआ? हाँ, वो तो गड़बड़ ना हुआ। अब नॉर्मल बताओ, लेकिन ये लो हो जातो। अच्छा, लो हो जाते? अच्छा, ठीक। लो बताओ। पैरों में कोई सूजन तो नहीं आई? सूजन अब आई है। पैरों में? हाँ, पैरों में सूजन। पैरों में सूजन? दोनों पैर में? एक पैर में? दोनों में। अच्छा, ये पेट का सूजन और पैर का सूजन साथ साथ आया है? ये साथ ही साथ आएगा। साथ ही साथ आया। अच्छा, तो हम जैसे सोच रहे हम चलन तो। अच्छा, आप ये बताइए, कीड़े की दवा कोई ली आपने पेट में? टट्टी के में? ना। कोई कभी कीड़े केचुए वगैरह कुछ निकले कभी टट्टी के रास्ते से? ना, कभी ना मालूम। अच्छा, कभी टट्टी की जांच कराई आपने? लैट्रिन जांच ना भी, पेशाब भी रही। कभी टट्टी में खून आया? खून नहीं आया। अच्छा, कैसे रंग की? आओ हो भाई, जब आओ, जब पानी भरना ना आओ तब ऐठा भाई हमारे तब खून के ही भाई। अच्छा, ताजा लाल रंग का खून था या काले रंग का था? जैसे ना लाल रंग को, लाल रंग का, लाल सफेद। हाँ, जैसे बन जाते पेंचे। कितने दिन तक खून आया था? तो वो करीब हो गए 10-15 दिन। हम कब की बात है ये? यही तभी की बात है, 2 साल पहले। सारी परेशानी 2 साल से ही? हाँ, 2 साल से ही रही है। अच्छा, फिर उसका टट्टी में खून आना बंद हो गया? फिर सही हो गया। अच्छा, अब टट्टी ठीक आती है? अब सही ना होते अब टट्टी। अब लैट्रिन जब पेट की वजह से अब लैट्रिन नहीं होती। तो दिन में कितनी बार जाती है लैट्रिन? लैट्रिन जाते मगर वे गांठें सी होती हैं। गांठें आती हैं? किस रंग की आती हैं? जैसे काले आती है? अच्छा, बिल्कुल काला, तारकोल जैसा? ना, हल्का काला? हल्की वैसी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब
पेट में दर्द भी होता है कहीं पे? दर्द जो यहाँ पर चलो तो नेक मालूम पर तुम जो यहाँ पे, अच्छा। जो जैसे हाल भी लगे गाड़ी फाड़ी बैठ हाँ हाँ, तो जो नेक मालूम। अच्छा अच्छा, ठीक है। और ये सूजन बढ़ती जा रही है पेट की? बढ़िया रही है, बढ़ी रही है, अच्छा। बढ़ जाइए। कभी खून की उल्टी तो नहीं आई? कभी ना, कभी नहीं। और टट्टी में भी एक बार खून आया था 15 साल 2 साल पहले? कभी ना, अच्छा। भाई लैटरीन में यहाँ वो खून। अच्छा। और कभी उल्टी फुल्टी हमारे घर में कभी ना ये बात। So when you have a patient with she is a middle-aged lady and she has come with abdominal distension for 2 years, and there is also a history of swelling over the feet. So when you have a patient like this, you have to take a detailed history regarding the possibilities of abdominal swelling, which is usually ascites in this case, and pedal edema. So the more common causes which are responsible for ascites are, one is tuberculosis. Tubercular ascites is very common. Then malignancy in this age group is also ovarian malignancy, uterine malignancy, even GI malignancy. All these can be responsible for ascites. Then portal hypertension. Portal hypertension is very important disease, and she is somehow pointing towards the left hypochondrium. There is some pain or some swelling, something there. That once we examine, then we will know about it. But there is no caput medici and there is nothing which suggests that. So with this history, 2 or 3 things we have to take into account. First, the onset. So in this particular case, the onset is slow onset, or you can say gradual onset disease, because it is almost 2 years, and then it is slowly progressing. It's not rapidly progressing. She has also taken some medication, and she says that after taking medication, her swelling has become less, but still it is progressing to reach the present state. So now you have to decide what are the possible causes of her abdominal distension. So it could be a lump, it could be ascites, and it could be some other obstruction or something if there was an acute pain. But there is no acute pain, so that thing is ruled out. So we are going to focus on the chronic abdominal examination. So today we'll talk about how to do an examination of the abdomen in a chronic abdomen. So in the chronic abdomen, of course, before we start the abdominal examination, the first is to have a general examination. So general examination is classical, that you start with icterus, pallor. चश्मा उतार लीजिए, नीचे देखिए पैर की तरफ, पैर को देखिए, नीचे देखिए पैर की तरफ, पैर को देखिए, पैर बोले ना आपका, हाँ नीचे देखिए, so नीचे देखिए, नीचे उधर देखिए. The bulbar conjunctiva appears to be normal. ऊपर देखिए, palpebral conjunctiva, some mild amount of pallor, mild pallor is there, and जीभ दिखाइए, tongue is dry and थोड़ा सा माइल्ड, थोड़े बहुत इरेगुलर अल्सर्स टाइप के कह सकते हैं, या अंदर का लिए जीभ है ना. देन यू हैव टू सी फॉर द लिम्फ नोड्स. उठ के बैठ जाइए, थोड़ा सा चश्मा छोड़ दीजिए इधर, पैर नीचे करिए, पैर नीचे करिए. Important thing in this examination is the examination of the left supraclavicular node, which is known as Troisius sign, Troises, which generally sometimes gets enlarged in a case of abdominal malignancy. So that has to be ruled out. Otherwise, in a general examination, that is not the focus. You have to do the examination of all the lymph nodes. So we start from submental, then submandibular, then preauricular, then postauricular, occipital on this side, then on this side again, submental, no nodes, subpalpebral, submandibular, also no nodes, preauricular, postauricular, occipital. So the transverse group is not enlarged. Then similarly, jugulodigastric, jugulohead, supraclavicular. On this side, jugulodigastric, jugulomohyoid, and supraclavicular we like to see like this. So the supraclavicular nodes are also not enlarged. So the cervical nodes are not enlarged. You just go through the axillary nodes also. When first of all you ask her to put her hand like this,
मेरे कंधे पे हाथ रख दीजिए ऐसे, हाँ, और ऐसे सीधे बैठे हैं. तो फर्स्ट यू सी द medial group, then anterior group, then you can extend arm and see for apical group by here, and this side there is no lymph node enlargement. Similarly, you do it on this side. First the medial group, then the anterior group, then apical group, then like this you would see for the lateral group. On this side also the lateral group, and for posterior group you have to make her sit and see the folds. Let जाइए. आने दो. Now we come to the examination of the fingers. Of course, you have to take pulse, and you have to take the blood pressure. Pulse appears to be normal, and then you have to see the fingers, clubbing, collinikia, pulmonary. Only there is pallor is there, but no clubbing, no collinikia in this hand. Similarly, no clubbing, no collinikia, no pulmonary edema. Then you have to see for sacral edema and also for pedal edema. So now we see for pedal edema, we press for 30 seconds on the dorsum of the foot and release. You see there is pitting come here. So we press again for 30 seconds. There is pitting, and we will see on the middle malleus also, or on the shin. You see there is pitting here, and similarly on the other side, pitting on the sides. So two things are very clear in general examination, that the patient has mild pallor and she has pedal edema bilateral. Other examinations are negative. Now coming to the abdominal examination, we'll hurriedly थोड़ा इसको नीचे करिए, आप इधर आइए. So now on inspection, ये कैसा निशान है अम्मा? ये कैसा निशान है? यहाँ पे कुछ किया था क्या इस जगह पे? नहीं. So you see that on examination, first of all you have to inspect. So there are 4 steps: inspection, palpation, percussion, and auscultation. So all these 4 steps, and of course we will include PR examination and PV examination if required. So first of all, on inspection you have to see that there is fullness in the lower abdomen. All the quadrants are moving with respiration. The umbilicus is transversely stretched, and there are stria gravidarum on the lateral sides, and you'll ask her to cough and see for hernial orifices. खांसिए. The hernial orifices appear to be normal. There खांसिए जोर से. So hernial orifices are normal, and there is no visible peristalsis, there is no visible pulsation, there is no presence of caput medici or any venous engorgement. So that is about the inspection. Then we start the examination by palpation, and we just start from the lower abdomen, although we have to say that which part is involved should be examined last. So here subcostal, my hand is there in the left subcostal region, right hypochondrium. There is no gallbladder palpable. Apparently liver is also not palpable, but since there is collection of fluid distension, it is very difficult to comment. Now then we want to see this whole suprapubic region also is full, and the lower flanks are full. So there is fullness in the lower half of the abdomen, and all the quadrants in the lower abdomen are full. So now we want to confirm whether there is free fluid in the abdomen or not. So for that we do shifting dullness. First we will try to do fluid thrill, and if necessary you like to do a shifting dullness also. So for fluid thrill, you put your hand in the middle and press, and one hand on this side and one hand on this side. Yes, there is definite fluid thrill. When I'm trying to do like this, I can feel the impulse on the other side. So this is fluid thrill.
And since fluid thrill is positive, shifting dullness is not required in this case, because that it definitely indicates the presence of fluid in the lower abdomen. However, just for teaching purpose, I will demonstrate how to do shifting dullness. So first we start for percussion in the midline, but since the fluid is too much, even the midline is not resonant, it is dull. There is some resonance here in the just lateral to the midline. It is dull compared to the midline. It is dull here. So once we reach the lateral aspect, we ask the patient to shift on the other side. Udhar करवट ले लीजिए माता जी. And you have to wait for about 1 to 2 minutes till the fluid shifts to the other side. And then you start percussion again, so that you see there is shifting of the fluid or not. You can see and can hear the sound which is resonant. That means the fluid was here, now it has shifted to the other side, which has resulted in only the bowel being present here, which is filled with gas and which is giving us a resonant sound. So we can percuss and go to the midline, and you will see that there may be some dullness when we reach the midline. Not much change, but there is definitely resonance more on this side and less on the center. सीधी हो जाइए. So that is very clear that she has fluid in the abdomen, and even fluid thrill was positive. Now shifting dullness is also positive. So that means there is collection of fluid in the abdominal peritoneal cavity. We'll try to just do a quick examination of the spleen. थोड़ा मेरी तरफ करवट ले लीजिए. Because one of the causes of ascites is splenomegaly with portal hypertension. सांस लीजिए. This is how you put your hand at the 10th, 11th, 12th rib, and then you put the hand, start from the midline and try to ask her to take deep breath. सांस लीजिए माता जी. So if the spleen is enlarged, you will have feeling of the spleen coming and striking your fingers. So in this case the spleen is not palpable, so there is no splenomegaly. सीधी हो जाइए. Similarly, we like to do the examination of the liver, and that can be. लंबी सांस लीजिए. लंबी सांस, ढीला छोड़िए. फिर सांस लीजिए. सांस लीजिए. सांस लीजिए. ढीला छोड़िए. So the liver also does not appear to be enlarged. So there is no hepatosplenomegaly, and of course the gallbladder area cannot be examined fully in this case. So what on the history and exam? Now we will auscultate. Where is the stethoscope? जा साइड से दिक्कत होती है. डॉक्टर साहब 10-12 साल हो गई, कभी तो कुछ नया हो, मगर अब करे आए के ठीक है. बहुत साल से नॉर्मल. हाँ. ठीक है. And she requires a PV and PR examination that we are not going to do right now. So with this examination, history examination, the final diagnosis is ascites and bilateral pedal edema. So now we have to look for the cause of ascites, and I told you in the very beginning that tuberculosis is the most important one. Then you can have malignancies which can cause then anemia with hyperproteinemia and portal hypertension. Portal hypertension is almost ruled out. Anemia is a possibility, but I think we should focus more on tuberculosis and malignancy. For that she needs a lot of investigation, which we will see which has been done or not. Thank you very much.